Assalamu alaikum. Welcome to lecture 17 of data mining. Today we will continue with our discussion on clustering. We had started talking about the k-means clustering algorithm last time. We will discuss that briefly with some extensions to the k-means algorithm. And we will then discuss the k-medoids and the k-modes algorithm briefly, and then we will move on to the hierarchical clustering approach, which is the next main category of clustering algorithms. So that is basically the agenda for today, and we do have a quiz at the end of class at around 3. ठीक है तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो दे कैन स्पीक आउट लाउडली या मुझे हैंड रेज कर दे या मैसेज कर दे जो एक्चुअली अभी जो माइक की आवाज़ कई दफ़ा मुझे समझ नहीं आती तो यू कैन ट्राई मल्टीपल ऑप्शंस माइक का वॉल्यूम शायद लो है ऑलराइट so we were talking about the k means clustering algorithm. So, uh, so the k-means clustering algorithm is a partitional clustering algorithm. So it is a partitional clustering algorithm. This is a category of clustering algorithms. So we can categorize clustering algorithms as partitional or hierarchical or graph-based and so on. And secondly, uh, k-means clustering is a prototype-based clusters, gives you based clusters. So this categorization is based on the types of clusters or clusterings that are produced by k-means. So the idea, the point here is that each cluster is described by a prototype. And in the case of k-means, the prototype is the mean or the centrally located point in the cluster. Okay. And so there are some other characteristics of the k-means algorithm, like the k-means algorithm is global. It has a global criterion, which means that it has an objective function that is defined over the entire data set. So that objective function, we try to minimize that objective function over the entire data set. So it's like an optimization problem. So it's not defined over a local subset of the data set, it's defined over the entire data set. So that's why this is called, it has a global criterion. Okay. So we discussed the algorithm last time. So very quickly again, so the k-means clustering algorithm, the very simple pseudocode is given in this slide. So we have to take as input k, which is the number of clusters. So k needs to be an input. So as a user, you will need to specify कि आपको कितने clusters चाहिए, कि 2 चाहिए, 3 चाहिए, 10 चाहिए, 15 चाहिए. So this has to be specified upfront. And then of course you have to give the entire data. The data is assumed to be in vector form, and each attribute is defined by numeric. Each attribute is numeric in nature, meaning that you have values that are continuous for each attribute. So you start, the initialization is you start by selecting k initial points. Either you do that or you basically find k partitions or non-empty partitions of the data set. So the whole idea of this initialization is we need to start with some k clusters.
So those clusters can be defined by k points or some partitions of the original data set, some k partition of the original data set. So once if you have done the initial partitioning, then you find the clusters centers, which is basically the mean of all the objects within that cluster. So then you go into the loop where you assign each object to the nearest cluster mean, uh, meaning that, and of course, nearest means that you have a similarity function defined, uh, और जिस मीन के साथ एक ऑब्जेक्ट सबसे क्लोजेस्ट है या मोस्ट सिमिलर है उस क्लस्टर में आप वो डाल देते हैं ऑब्जेक्ट. ठीक है. सो यू डू दिस फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स. सो वंस यू हैव डन द असाइनमेंट यू हैव न्यू क्लस्टर्स, नए क्लस्टर्स बन जाते हैं. तो नए क्लस्टर्स आ गए तो फिर आप उसका मीन निकाल लेते हैं. नया मीन निकाल लिया तो फिर आप असाइनमेंट कर लेते हैं. असाइनमेंट करते हैं तो फिर नए में निकाल लेते हैं, अनलेस देयर इज नो चेंज इन द मीन और देयर इज नो चेंज इन द असाइनमेंट टू द क्लस्टर्स. So that's where you stop. So this is the basic process. So there are two main processes. One is the assignment process. The other is the mean computation process. The assignment process actually corresponds to the uh, maximization step in the EM algorithm. So we are not discussing the EM algorithm in detail, but the K-means algorithm is actually the EM algorithm, expectation maximization algorithm. सो जो असाइनमेंट का जो स्टेप है वो मैक्सिमाइजेशन है, जो मीन कंप्यूटेशन है वो एक्सपेक्टेशन है स्टेप है. ठीक है. सो दो आर टू मेन स्टेप्स. ठीक है. सो वी सेड दैट देयर इज एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन और ए कॉस्ट फंक्शन. So cost function basically is the sum of all the distances, the sum of the similarities or distances of each object from its corresponding mean. ठीक है. तो sum for all k is equal to 1 to k, and then you have another sum of all objects I is equal to 1 to all n. So there are n objects. Then we have an indicator function ik which multiplies with the distance, ठीक है, between object x I and mean of cluster k. So x and m are in general vectors that have numbers in them. So basically numeric attributes. So m, k, ठीक है, mean of cluster k, x I. So basically object I. ठीक है. ठीक है. And of course ik is an indicator function. So this is equal to 1 if object I capital हो जाता, I belongs to cluster K. Otherwise it is 0. ठीक है. So इसका मेन पर्पस ये है कि हमने सिर्फ वो डिस्टेंसेस इंक्लूड करने जो क्लस्टर के में एग्जिस्ट करते हैं. तो इफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट इन क्लस्टर के वी डू नॉट सम इस डिस्टेंस फ्रॉम इट्स मीन. उसके रेस्पेक्टिव क्लस्टर के मीन से हम डिस्टेंस सम करेंगे. सो so that's the idea. So this is the objective function that this minimizes. So so this is an optimization problem, an unconstrained optimization problem. Uh, for unconstrained optimization problem, the issue here is that we do not get a global minimum. This is not a convex, it's basically a non-convex optimization. Which means that if you
run the algorithm, you may not reach the global minima, the global best or optimal solution. You may reach a local minima. ठीक है, आपके पास कोई भी कॉस्ट फंक्शन का फंक्शन है, तो आपका उसको एक ग्रेडियंट जहाँ जीरो होगा वो पोजीशन मिल जाएगी, बट इट मे नॉट बी द लोएस्ट पॉइंट ऑफ दैट कॉस्ट फंक्शन. इट मे बी द लोएस्ट पॉइंट इन द नेबरहुड ऑफ वेयर इट स्टार्टेड. ठीक है, सो ग्लोबल मिनिमैलिटी इज नॉट गारंटीड. ठीक है. All right. So, so any questions on the k-means and the basic steps of the k-means algorithm? What is the computational complexity? So, so the computational complexity is actually linear in all the key variables or parameters of the algorithm. So basically, n is the number of objects, k is the number of clusters, and t is the number of iterations. ठीक है? T, ठीक है? So why is this? So basically, if you look at the algorithm above, क्या करते हैं आप, हर लूप में एक लूप बना था हमारे पास रेपिटेशन का. उस लूप में आपने हर एक ऑब्जेक्ट को उठाना है, उस ऑब्जेक्ट को, हर एक ऑब्जेक्ट को हर क्लस्टर के साथ कंपेयर करना है. सो क्वेश्चन ये पूछें, ये क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन कोई इससे पूछना था, पूछ ली. अच्छा, ठीक है. ऑलराइट. Okay. So in each loop, we compare each object with each cluster mean. So there are n objects and there are k clusters. So n k यहाँ से आ गया, और फिर वो पूरा प्रोसेस कितनी दफ़ा रिपीट होता है? इन जनरल वो t दफ़ा रिपीट होता है, which is the number of iterations. So in general, जो t है, number of iterations is, अच्छा ठीक है, तो ये क्वेश्चन है किसी का, ठीक है. So basically, okay. So basically कोई कॉस्ट फंक्शन जो मैंने c लिखा था, तो कॉस्ट फंक्शन जो है, एज आई सेड, इज नॉन कॉन्वेक्स. कॉन्वेक्स कॉस्ट फंक्शन होते हैं, वो इट हैज जस्ट वन पॉइंट एट विच देयर इज ए मैक्सिमम और वन पॉइंट एट विच देयर इज ए मिनिमम. ठीक है, तो वो कहीं से भी आप स्टार्ट करें तो वो हमेशा उधर ही रुकेगा. सो दैट मीन्स दैट इट इज ए ग्लोबल मिनिमा और ग्लोबल ऑप्टिमल. जो हमने कॉस्ट फंक्शन के मीन्स का डिफाइन किया है, it is a non-convex optimization function. It may have multiple positions at which you have a minimum. So this may be a global
minima, but there is a local minima here as well. So हमारे पास गारंटी कोई नहीं है कि हम इधर रुकेंगे या उधर रुकेंगे. हम इधर से करीब शुरू होंगे तो हम इधर रुक जाएंगे, इधर शुरू होंगे तो मे बी हम यहाँ रुक जाएंगे. ठीक है. So that is the difference between a global minima and a local minima. और जो एक पहले मैंने एक चीज बताई थी कि ग्लोबल क्राइटेरियन है, दैट बेसिकली सेज दैट कि हमारा जो भी एल्गोरिथम है लुक्स एट ऑल द पॉइंट्स एंड ट्राइज टू फाइंड अ मिनिमा. दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस डेफिनेशन और दिस एक्सप्लेनेशन. दिस इज अबाउट ऑप्टिमाइजेशन. तो ऑप्टिमाइजेशन में जो के मीन्स की जो ऑप्टिमाइजेशन है वुड ओनली गारंटी ए लोकल मिनिमा, इट विल नॉट गारंटी ए ग्लोबल मिनिमा. ठीक है. बट the K-means algorithm does use a global criterion in the sense that it uses all the data points together at once to find uh, the clustering of the data. ठीक है. वो एक different चीज़ है और ये एक different चीज़ है. So it's just clear now. ठीक है. So basically जो K है in general would be much less than N, and जो T है that also would be much less than N. So usually, let's say बहुत ज़्यादा बड़ा data set है, hundreds of thousands of observations, K generally 10, 20, 30 clusters ही होंगे. And number of iterations for many practical applications, it doesn't go beyond 15, 20, 30 से ज़्यादा नहीं जाते. In fact, 10 के अंदर most applications में वो converge हो जाता है. So T and K is generally small, and of course is the number of observations in your data that can be large. But given that all of these parameters multiply to give us the complexity. So this is still an efficient algorithm. So it's an efficient algorithm. ठीक है. Right. Okay. Some other characteristics of this algorithm. Uh, so remember in the optimization formulation, I wrote D, distance between X, I, and M, K. ठीक है. So we can actually use in the original K-means algorithm, D was basically the Euclidean distance. Euclid. ठीक है. This was in the original K-means algorithm, but later on it was found that this algorithm would work for other functions as well. So you can use Manhattan, you can use Minkowski, you can use others as well. Although it is desirable that whatever function that you use, it should be a metric. Metric का वही तीन conditions हैं. It should satisfy the triangle inequality. It should be symmetric. It should be greater than or equal to 0. ठीक है? And 0 only when we have the same object. So it is desirable that you have those characteristics, but it's not essential. आप ना यूज करें तो ठीक है, कन्वर्जेंस में थोड़े से इश्यूज आ सकते हैं, बट कन्वर्जेंस के जैसे मैंने कहा इन एनी केस कोई भी मेजर यूज करें तो फिर भी आते हैं. कन्वर्जेंस इज नॉट वेरी कह लें कि स्मूथ, एंड एज आई सेड कन्वर्जेंस वुड ओनली बी टू ए लोकल मिनिमा, नॉट टू ए ग्लोबल मिनिमा. एक तो लोकल ग्लोबल का डिफरेंस है, एक स्मूथनेस का इशू है. तो स्मूथनेस वुड बी एन इशू फॉर many applications. It will more be an issue, more of an issue if it is not a metric, if the function that you use is not a metric. ठीक है. But D आप और use कर सकते हैं in practice, and people have done it. ठीक है. तो यहाँ मैंने distance लिखा हुआ है, आप similarity भी use कर सकते हैं, but of course in similarity you will be maximizing the objective function. Distance में आप minimize कर रहे हैं.
ठीक है, द एल्गोरिथम डज नॉट चेंज, एल्गोरिथम वही रहता है। ईएम एल्गोरिथम की जो टू स्टेप्स हैं, असाइनमेंट और मीन कैलकुलेशन, वो वही रहती है। ठीक है, okay, so that's about the function. uh, so we said that k-means clustering is prototype based, right? The clusters that are formed are prototype based. So we sometimes say that it only finds spherical clusters. So remember, जो भी कोई क्लस्टर हमारे पास, ये एक सेंटर कोई पॉइंट होगा, वो क्लस्टर को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, और सिंस डिस्टेंस इज ए मेट्रिक, तो most points would be at equidistance. The most furthest point would be at equidistance from that center point. So as a result, as a consequence, आपके पास हमेशा spherical clusters आएंगे। लेट्स से आपका डेटा क्लाउड कुछ इस तरह का है, लेट्स से ये यहाँ डेंसिटी कुछ है, यूं करके जा रही। आई डोंट नो ये पॉइंट्स नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो जब आप दो क्लस्टर्स बनाएंगे तो ये दो क्लस्टर यूं ही ढूंढेगा, इवन दो ओरिजिनल जो शेप है वो स्फेरिकल नहीं है। ओरिजिनल शेप, लेट्स से यहाँ मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये यूं करके है, तो ये यूं करके दो क्लस्टर ढूंढ लेगा, इवन दो द ओरिजिनल शेप इज नॉट spherical, because it is defining a cluster by a center and by distances around that center. So if your data set consists of non-spherical clusters, then it will not be able to correctly represent them. ठीक है, one other issue with the k-means algorithm is that since it is based on a central point which is calculated as a mean, ठीक है, ये mean है। So if you recall, mean is prone to outliers. So let's say आपके पास कुछ, ये डेटा क्लाउड में बना रहा हूँ, इधर ये डेटा कुछ है, यहाँ बेशुमार डेटा, और एक पॉइंट इधर है। इस पूरे क्लस्टर का जब मीन निकालेंगे वो थोड़ा सा राइट को शिफ्ट हो जाएगा, दिस वुड बी द मीन। So that one outlier has pushed the mean to the right. So mean as a prototype is prone to outliers. So as such, the k-means algorithm is impacted by outliers. So, so you need to be aware of that. So if you have outliers in your data set, uh, you might get clusters that are not truly representative of the groupings in your data, because the center might be shifted significantly by some outliers. So noise and outliers can distort the clusters in a k-means algorithm. We also said that k-means only finds spherical clusters. If your data set has non-spherical clusters or clusters with odd shapes, then the k-means algorithm may not be representative of those clusters. Similarly, generally, also generally since it is an optimization problem, generally जो k-means cluster ढूंढेगा काइंड ऑफ इक्वल साइजेस का ढूंढेगा, मतलब ये इस तरह के क्लस्टर ढूंढेगा ऑलमोस्ट इक्वल साइजेस का। इट वुड बी अनलाइकली दैट योर k-means algorithm फॉर्म ए वेरी बिग क्लस्टर, एक ढूंढ लिया दूसरा छोटा ढूंढ लिया। इसकी वजह क्या है? बिकॉज ऑफ द कॉस्ट फंक्शन, जो कॉस्ट फंक्शन सी आपने डिफाइन किया ना, it tries to minimize the sum of the distances of each point from its mean. अब ये वाला इसका, इसमें जो कॉस्ट होगी, जो सेकंड मैंने ड्राइंग बनाई है राइट पे, इसकी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दो छोटे क्लस्टर्स की। हाँ, ठीक है, तो लेट्स से ये दो छोटे क्लस्टर्स हैं,
इसका सम जो कॉस्ट फंक्शन होगा इसका थोड़ा होगा एज कम्पेयर टू वन बिग क्लस्टर एंड वन स्मॉल क्लस्टर। बस रिमेंबर कॉस्ट में क्या आ रहा है, ऑल द डिस्टेंसेस फ्रॉम पॉइंट टू द मीन। तो जब क्लस्टर बड़ा हो जाएगा तो उसका कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो के मीन जनरली क्लस्टर्स ऑफ इक्वल साइजेस और ऑफ सिमिलर साइजेस ढूंढता है। So this may be a disadvantage if, especially if your data set has clusters of different sizes. So all of these points that I'm raising, these are some of the characteristics of the k-means clustering algorithm, of the k-means clusters that are found, and so on. ठीक है? Okay. So we mentioned that. So we mentioned that the k-means clustering would typically converge to a local optima. ठीक है? Global optimality guaranteed नहीं है. So so obviously इस पे क्या इम्पैक्ट कहाँ से आ रहा है? लेट्स से आपका के फिक्स्ड है, इम्पैक्ट आपका इनिशियल पार्टीशनिंग से आ रहा है। रिमेंबर इन द के मींस एल्गोरिथम आपने इनिशियल एक पार्टीशनिंग करनी या इनिशियल के पॉइंट्स ढूंढने हैं। सो इफ यू स्टार्ट फ्रॉम सम डिफरेंट इनिशियल के पॉइंट्स यू माइट find a different local minima or maybe you might even find a global minima. ठीक है? So the initial partition, ठीक है, impacts the minima form. ठीक है? So if you run the algorithm twice by starting with random initial points, तो दोनों दफा maybe you might find different clusters. ठीक है? That's possible. ठीक है? So that's another characteristic. And finally, remember K is an input. So what is K? K is the number of clusters. So how do we as a data scientist know that इस data set में let's say 10 clusters हैं या 5 हैं या 20 हैं या 2 हैं? So we don't really know, and uh, unless the domain tells us that इसमें मैंने 4 clusters ढूंढने हैं तो we won't be able to determine. For example, let's say हम एक student data set का लम्स के स्टूडेंट का डेटा सेट की बात काफ़ी देर से कर रहे थे। लेट्स से इफ़ यू हैव सच ए डेटा सेट और आपके जहन में हाइपोथेसिस है कि आपने क्लस्टर्स ढूंढे दैट मैचेस समवट विद द 4 or 5 or 6 लेवल्स ऑफ स्टूडेंट्स एट लम्स। फ्रेशमैन है, सोफोमोर है, जूनियर है, सीनियर है, ग्रेजुएट स्टूडेंट है, 5 लेवल्स हो गए, 5 ग्रुप्स हो गए। तो मे बी यू कैन से के मैं के इज इक्वल टू 5 ट्राई करूँ। ठीक है? So, so this is a case where the domain is telling you the number of clusters. But for many other domains, आपको यही नहीं पता होता कि कितने clusters is ideal or best for this data set. ठीक है? So you typically have to try out multiple and see and visualize the results and see which clusterings makes the best sense. And also later on, we will talk about evaluating the clusterings. So also you'll have to use different Ks and evaluate the clustering. जिसकी इवेल्युएशन सबसे अच्छे आती है वो आपका के बेस्ट है। ठीक है? तो इवेल्युएशन हम बाद में पढ़ेंगे जब हमने सारी क्लस्टरिंग एल्गोरिथम डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है? सो एनी क्वेश्चंस? So we have talked about several characteristics of the k-means clustering algorithm, of the k-means clusters that are formed, and so on. So, so as a data scientist, you should be aware of these characteristics so that you can make an informed decision regarding the results that you obtain from the k-means clustering algorithm. Okay, one other characteristic which will lead us to a second algorithm is the k-means only works for numeric data sets.
So why is that? Because we need to compute the mean, right? So mean is only defined for numeric dataset that are described by numeric attributes. So it cannot be applied to datasets that are categorical in nature. Even ordinal datasets may be ideally, it won't work as good as for numeric datasets. ठीक है? Okay. इसमें quickly एक और टेक्निक डिस्कस कर लेते हैं, although that's not very popular in practice, but it can be applied to categorical data sets, which is called the K-modes algorithm. ठीक है? So as the name suggests, instead of the prototype being the mean, we take the prototype as the mode. The mode of objects in a cluster define its prototype. ठीक है? So mode क्या होता है? The most frequently occurring value. ठीक है? So let's say कोई कैटेगोरिकल में डेटा सेट देख लेता हूँ. लेट्स से आपके पास है जेंडर है और जॉब रैंक है. वी हैव बीन लुकिंग एट दिस बिफोर. दो ही एट्रीब्यूट्स लेट्स से ले लेते हैं. तो लेट्स से आपके पास एक क्लस्टर में ये एम है और जॉब रैंक ए एम है. फिर एम है, ये जॉब रैंक एस एम है. फिर एम है, फिर जॉब रैंक लेट्स से ए एम है. फिर एफ है और जॉब रैंक ए एम है. तो लेट्स से ये एक क्लस्टर में ये ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं. तो इसका मोड क्या होगा? So for each attribute, we find the most frequent value. तो for the first dimension हमारे पास मेल है. ठीक है? और for the second value, so आपके second के लिए am होगा. तो ये इसका mode होगा, and this would be the prototype for the cluster. And you will then now compute similarity or dissimilarity of all objects from this prototype, from this mode. ठीक है? So if your data set is categorical, all attributes are categorical, then you can use this K-modes approach. The rest of the algorithm remains the same. You start with some initial partition of the data, uh, then you compute basically the modes of each partition. You then assign each object to the mode to which is closest or most similar, and then you repeat the assignment and mode computation until there is no change. Okay. So this algorithm, as I said, is called the K-modes algorithm. The process is exactly the same, only the prototype is now defined as the mode. And we can compute the mode for categorical attributes as well. And as I said, you can also compute the mode for numeric attribute, but we don't use this for numeric attributes. We only use it for categorical attributes. ठीक है? All right. So of course, this is an advantage that it can be applied to categorical data set, but it is generally less stable. Uh, so, so we have basically not very stable, and we have convergence issues often. So what could be the convergence issues? The convergence issues इस तरह के आ सकते हैं. Let's say एक iteration में मोड M और AM आ गया. ठीक है? तो फिर हम नेक्स्ट आइट्रेशन पे गए तो लेट्स से ये M और SM हो गया. तो फिर हम नेक्स्ट आइट्रेशन पे गए तो फिर M और AM आ गया. ठीक है? एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज. SM. सो यू डोंट रियली नो वेयर टू स्टॉप. तो देर वो स्टॉप नहीं होता. तो स्टॉप का तो मसला ये है ना कि M AM आया तो नेक्स्ट आइट्रेशन में भी M और AM ही आए. ठीक है? एंड it continue in this fashion. That's where you stop. But oftentimes, because of the nature of mode,
कोई नया ऑब्जेक्ट आ गया, कोई निकल गया, या टाइज आ रही हैं between mode, because it might happen कि M और F दोनों same number of times आ रहे हैं. तो you can break ties randomly, or you can select one of them uh, by choice. But इस तरह के issues की वजह से the K modes algorithm may have problems converging or stopping. ठीक है. All right. So this was the K modes algorithm, which can be applied to categorical data sets. It's less commonly used. The K-means, of course, is the most popular algorithm in the entire data mining, I would say. The K modes is a variation for categorical data set. So there is another variation which is somewhat more popular, which is called the K medoids. ठीक है. So I think you can guess कि इसमें क्या होता है. K means में तो mean is representing the prototype. K mode में mode represent कर रहा है. तो यहाँ median is used as prototype. ठीक है. But median it's so median, of course, we don't have 1D data set. Usually data set could be multi-D, multi-dimensional. So median can also be thought as the centrally located object in the cluster. So we take the centrally located object in a cluster as its prototype, which we call the medoid, middle or median object. So वहां से ये medoid नाम आया है. ठीक है. ठीक है. The rest of the process it's the same as the K-means algorithm, but there is one issue. तो centrally located object किस तरह निकालेंगे आप. लेट्स से आपके पास 1D डेटा सेट होता है और न्यूमेरिक डेटा सेट होता है, वो तो आप निकाल लेंगे. बट लेट्स से न्यूमेरिक नहीं है, लेट्स से 1D लेट्स से आप होता है, तो आप कोई भी आप सॉर्ट कर लें इसको 1 2 3. ठीक है. तो 6 8 and 9 and 10. So in this case 6 would be the median centrally located point, but this is numeric attribute and also 1D attribute. So if you have 2D, let's say आपके पास 2D points हैं, 1 और 2 है, और 2 और 1 है, और 3 और 2 है. इन 3 पॉइंट्स में सेंट्रली लोकेटेड पॉइंट किसका निकालेंगे आप. एंड ऑफ कोर्स दिस इज फॉर अगेन न्यूमेरिक, बट लेट्स से आपके पास इवन नॉन न्यूमेरिक कैटेगोरिकल एट्रीब्यूट्स हैं. लेट्स से या मिक्स्ड एट्रीब्यूट टाइप्स हैं. सो लेट्स से आपके पास एक एम है, ए एम है एक ऑब्जेक्ट, दूसरा फीमेल है और ए एम है, और एक तीसरा जैसे फीमेल और एस एम है. ठीक है. अब इसमें सेंट्रली लोकेटेड ऑब्जेक्ट किस तरह निकालेंगे हम. ठीक है. सो सो दिस इज सो the computation of the mean as we did for k-means was very easy. We took the mean of all the objects in a cluster. Similarly, for the computation of the mode was also easy. We looked at each attribute of all the objects in a cluster and found the maximum value or the most frequently occurring value. But to find the centrally located object, we will need to resort to another approach. We can't use such simple approaches. So the approach that we use is we have to use a similarity or dissimilarity function that we have function, and check for every option, and then settle for the option that leads to the least uh, dissimilarity,
or the maximum similarity. If you are using dissimilarity, that would reduce your least cost function. So in other words, basically, let me show you a process. Process मैं बताता फिर ये समझ आएगा. So let's say we have two clusters. ठीक है? So and let me give them ऑब्जेक्ट को मैं लेटर्स देता हूँ. ठीक है? तो क्लस्टर वन में ए बी और सी है. तो दिस इज क्लस्टर वन. और लेट्स से क्लस्टर टू में डी ई है. दिस इज क्लस्टर टू. ठीक है? ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी सी. ठीक है?